Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Very respected viewers, today we are going to talk about the Freud psychosexual theory for the child development, psychosocial development. Its second stage, that is about the anal stage. That is the stage in which the age range is 1 to 3 years. And erogenous zone is about ball and bladder control. That is also very important for the personality, for its own control, and for very personal. A person can manage these things. First of all, the parents help, and if the person is able, the child is able to perform its own training, like as Freud is suggesting, this one is related with the toilet training, positive toilet training. Sometime it happens that the child is well trained, its manners are being introduced, the parents are well mannerly presenting something and asking something and giving some directions very politely, very respectfully, with a full coverage of love and affection, then it will prove to be a good sign in the personality development. And the child will become very competent, productive, and very creative. बड़ी आम बात है कि टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की और इसका ताल्लुक कि प्रोडक्टिविटी से भी है, उसके पॉजिटिव साइंस ऑफ पर्सनैलिटी से भी है. तो हम क्या करें? हम उसको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम उसको मैनर्स, हाउ टू यूज the toilet, how to use the order of using toilet, and making cleanliness, which is not irritable for a child. कि अपने लिए तकलीफ दे ना हो, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से वो अपने आप को कंफर्टेबल करता है. और सम टाइम ऐसी सिचुएशंस होती हैं, द पेरेंट्स बिकम इरिटेटेड. Oh, what you have done? Oh, nonsense. And they are humiliating the child, and it's not good for the development of the personality. तो हमें देखना यह है कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर रही हैं. एंड इन दिस थ्योरी वी आर ऑब्जर्विंग, सीइंग कि उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में एक छोटी सी चीज़ है, दैट इज़ द टॉयलेट ट्रेनिंग, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड we'll see if the parents are too lenient. Freud suggested that anal expulsive personality could develop, in which the individual has a messy, wasteful, or destructive personality. We not to be more lenient. You do it yourself. वॉशरूम के अंदर, रेस्ट रूम के अंदर अनअटेंटिवली मौजूद है. वी आर मोर लीनियंट वट एवर यू डू. वो बहुत सारी चीज़ों को अपने तौर पे वेस्ट कर रहा होगा. अगर टिश्यू पेपर यूज़ करेगा, यूज़ प्रॉपर नहीं करेगा, बल्कि बहुत सारा टिश्यू ज़ाया कर देगा, पानी बहुत सारा बहा देगा, और इस तरह की चीज़ें हैं कि वो उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकेगा. तो उसकी सुपरविजन, उसकी असिस्टेंस के लिए वी टू बी देयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रस्ट. ऑटोमेटिकली हमारी वहाँ पर मौजूदगी, वहाँ हमारी बाइज्जत मौजूदगी उसके लिए मुस्बत असरात मरतब कर सकती है. हाँ, इसमें अगर इफ द पेरेंट्स बिकम टू स्ट्रिक्ट, देन व्हाट विल हैपन? दैट इज ऑल्सो
believed by the Freud that anal retentive personality will be developed. Retentive personality का मतलब ये होगा कि the individual is more stringent, orderly, rigid and obsessive. That is problematic. कि उसके मिजाज में सख्ती आ जाएगी, उसमें कोई तरतीब नहीं होगी काम करने की, और फिर यह है कि कई दफ़ा वो चीज़ों को ऑब्सेसिवली यानी रेपिटिशन, बिला ज़रूरत रेपिटिशन करता चला जाएगा और उसके अंदर एतमाद पैदा नहीं हो सकेगा. इट्स वेरी लिटिल थिंग दैट इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी आस्पेक्ट, दैट अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी is required for the child. So we do be very careful about this stage in which the toilet training, the simple training, we never care. But if being educationalist, being psychologist, being a parent, we can play a role that how we to train a child at this very sensitive component of the development. Thank you very much.